very much once both the king and the queen Chitraketu got to know about this news, then they were too much into sorrow. And then again, the Angira Muni comes and seeing this condition of king, he starts giving him some good instructions. So till this point, yesterday we have seen, right? And आप लोगों को एक puppet show मिला? I have also sent one link of puppet show. It is there on the internet also. I don't know आप में से कितने लोग देख पाए. This whole pastime of Bhagavatam is depicted in the form of a puppet show also. So I don't know आप देख पाए अगर नहीं देख पाए तो बाद में आप देख सकते हो उसको ठीक है. Now let us go ahead further in our discussion today. In next half an hour, we will try to cover some other. There are some very wonderful things which is going to be there in the next part now. So we will discuss it now in the next half an hour. Okay, you can continue. I will give you. Let me just share my screen. Okay, तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा, right? Angira Muni and the Narad Muni has come, and then so they one of the first things they told to the king that how, like all of us we come together, just like the sand particles they come together inside the ocean. जैसे ओशन में जो वेव्स होती हैं वो साथ में कुछ पार्टिकल्स को लेकर आती है और फिर वो वापस अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं. तो वैसा उन्होंने बताया था कि कैसे वैसे इस वर्ल्ड में भी हम सब कुछ समय के लिए साथ में आते हैं. ऑल ऑफ अस वी कम टुगेदर and I gave you example at how if you reflect back in your life, then in your first class, second class, third class, like I'm from an army background. My father was in an army. So in army what we have is every 3 years we have a transfer, so like that I have been to many parts of India. My father was posted to different parts. I have been to north also in Shimla. I have been there. And if you talk about the west, I was वेस्ट में ज्यादा जाने का मौका नहीं मिला. माय ऑफ कोर्स होम टाउन इज जोधपुर राजस्थान. वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे मैंने स्पेंड किया टाइम. एंड देन ईस्ट में इफ यू सी आई हैव बीन टू Calcutta for 3 years. Then if you talk about the south, I have been to Pune. There also I have stayed for 4 years. And then there is Belgaum, Karnataka. There also I stayed for 3 years. So like that I have traveled to different parts of India. So what I wanted to say was that how if you remember, जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हमारे पास कुछ फ्रेंड्स थे, फिर दूसरे क्लासेस में तो दूसरे फ्रेंड्स आते हैं. लाइक दैट इफ यू रिफ्लेक्ट बैक इन 11th 12th class you had different set of individuals with yourself, and now when you have come to the college, now you have another set of individuals with you. Tomorrow when you will pass out, you will go to the job life, then another set of individuals will be there surrounding you. So like this you will find that all these individuals keeps on changing in our life. And now you may say that sir, our parents don't change, our relatives, friends don't change, but actually you will find we are able to see only this lifetime. If you see our journey in this world previous to this life, or in the life ahead, we're going to meet with some other individuals. We will have some other people as our father, mother, and friends and relatives. So that's why we discussed that how this is the reason that they are called as the relatives, because they will keep on changing in our life. Okay, and there's only one person who is going to not change in our life, with whom we have a permanent relationship, and that is our Supreme Father, Krishna. That's why that relationship is the absolute relationship which we have in our life. Okay. So till this point, we have some discussion till yesterday. Okay. आप में से किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड जब तक हमने डिस्कस किया, या फिर नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं. ओके चलो, देन विल गो अहेड, है ना. तो कल जिनको अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे पाए थे पढ़ने के लिए, आज वो लोग पढ़ सकते, राइट. एंड वी वुड लाइक टू बिगिन विद उत्कर्ष मे बी टुडे. उत्कर्ष यू कैन फर्स्ट रीड एंड देन मे बी अवर yesterday जिसको नहीं मिला था दिव्यांशु also we going to do they all can read, है ना. So यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था. This question also we have discussed, right. यहाँ से भी हमको पढ़ना है. Yes, उत्कर्ष please read. Yeah. Start करूँ sir? हाँ. Hello. हाँ. Yeah, you are audible. You can Hello. start. Yeah, you are audible. आप Okay. start. जी. Then Narad Muni, by his mystic power, brought the soul of the prince back into the dead body. Narad said, "O living entity, all good fortune unto you. Just see your father and mother. All your friends or relatives are overwhelmed with grief because of your death. Because you died untimely, the balance of your life still remains. Before you may enjoy the remainder of the years allotted to you in this body,
with your friends and relatives, and later you may accept the royal throne and all the opulences given by your father. Yeah. So नाद मुनि is telling to the sign. देखो यहाँ पे देखते हैं ना फोटो में भी नाद मुनि ने उस बच्चे को वापस लाइफ में लेकर आ गए और उन्होंने उससे बोला कि अरे तुम बहुत जल्दी अपना टर्म एंड के टर्म से पहले तुम चले गए छोड़ के अब तो प्रिंस हो आगे चल के आपको थ्रोन मिलने वाला है लाइक दैट ही इज मेंशनिंग ओके लेट अस मूव अहेड रीड this is a now section the child gives a transcendental message now the child is going to speak certain things है ना which are very valuable for all of us to learn and understand yeah go ahead Utkarsh The child gives a transcendental message. The child who had been dead sat up and began to speak, not with the childishness of a young boy, but with the full knowledge of liberated soul. According to the results of my material activities, I, the living being, transmigrate from one body to another, sometimes going to the species of the demigods, sometimes to the species of lower animals, sometimes incarnating among the vegetables and appearing sometimes in the human species. yeah so now the boy is now speaking है ना what is the first thing he's speaking he's speaking at how because of my karma I have been moving into the different species some what is the meaning of demigods आप इसको बता सकते हैं demigods का क्या मतलब होता है देवता Devta god, देवता right? Yeah, there's a supreme god, Krishna, and then he has appointed some small gods. Demigod means small gods. So they are the people who run the show in the material world. They are called the Devtas ko demigods bolte, right? So sometimes we also were born into the Devtas, into the heavens. Sometimes we take birth in the animal body, or sometimes we take birth in the plant's body, like that he is mentioning, okay? And that is being decided based upon our karma, according to the results of my activities. Yeah. Yes, go ahead. Yes, sir. Screen flip हो रही है बीच में. In which were these two people my father and mother? No one is actually my father and mother. I have had millions of so-called parents. How can I accept these two people as my father and mother? So the child is telling that I have been to different species and I have so many fathers and mothers. Like here you can see in this picture, na, like how we all are, like a person grows old and then he moves to the another species. Sometimes he may go to the body of a human being only, and he may start his journey from the mother's womb. Or sometimes he may get into some other lower species. Just like you can find the varieties of the animal species one may get body into. So that is how it happens. So basically we get father mother in every species of our life. When we took the body of a dog, we had a dog father and dog mother. When we take the body of a cat, we had a cat father and cat mother, like that. Okay. Yes, go ahead. Yes, sir. Screen move कर रही है. Lag है net का. The Vedas teach that the eternal living being enters a body made of material elements. Here we find that such a living being entered a body produced by King Chitraketu and his wife. Actually, however, he was not their son. The living entity is the eternal son of the supreme personality of Godhead. But because he wants to enjoy this material world, God gives him a chance to enter various bodies. Yet the pure living beings has no true relationship with the material body he gets from his father and mother. Therefore, the soul who had taken the body of Chitraketu's son flatly denied that the king and queen were his parents. Yeah. So he told that they are not my parents because I had so many other parents in my different life. Okay. Like that he is mentioning. Okay. Okay. So here is a question for you, Utkarsh. The child spoke the following. First is he refused to accept anyone as the mother or father except the Supreme Lord. Correct or wrong? He refused to accept any one of his mother except this. Yes, sir. It is a Okay. true. Correct. First A Second wala. second point, although he had millions of so-called Although parents. he had millions of so-called parents, he accepts them. No, false. है ये. Good. Third point. A pure soul has no connection with the material body and he receives from parents.
no connection with the material body and he receives from parents. No sir, Yes, ये right है कि wrong है? wrong है सर, क्योंकि because हाँ he receives from parents, ये नहीं होना चाहिए। आगे का तो सेंटेंस सही है। नहीं, पूरा ये सही है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में हम सबका कोई रिलेशनशिप नहीं है इस बॉडी से, जो हमको पेरेंट्स से मिलती है। बेसिकली बेसिकली हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है इस मटेरियल बॉडी से। मींस बेसिकली वी आर फ्री, we are not dependent upon this body, we don't belong to this material world, that is what it says. And the last part, Jiva is eternal being, son of Supreme Lord, but he enters into temporary material body given by parents to serve the Supreme Lord. Yes, sir. perfect, thank True you. है। Okay, next chance, next Divanshu, आप पढ़ेंगे? Yes, sir. Please. Yes. In the material world, we come together as a family, stay together temporarily, and get separated, never to meet again. The soul continued. In this material world, which is like a swiftly flowing river, all people become friends, relatives, and enemies in due course of time. They also act neutrally and in many other relationships. But despite these various transactions, no one is permanently related. Yeah. So one question for you, Divanshu. What this world is compared to here? इस वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया है? सर एक मींस फ्लोइंग रिवर के साथ। क्यों? सर क्योंकि वो ओके ओके, आगे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। राइट राइट। सर अभी स्क्रीन आई नहीं है, हाँ, लैग करिए। नहीं आया स्क्रीन? Millions of yes sir अब आ गया। Millions of living entities come to this world and all of them are given a certain type of body. A few living entities, say 5 or 6, are put in a group called a family and they stay together for a period of time. They are then separated by death, never to meet again. It is like meeting somebody in a train journey from one place to another. During the journey, you make friends with him, but once the destination comes, you go your way and he goes his way. Yes, that is what happens in this world, isn't it? Right? यहाँ पे देखो दिखा रखा है ना, in every species we get our families. Like here is a species of the lion, so lion also have a lioness and the children, and here is another family of the person. Somebody gets the body of a penguin. In the penguin also he has his own family. Then one has a family in the monkey body, and same way even in this life we have our family. And you'll find that here also we are not able to stay together permanently, right? For example, like a husband and the wife, they come together and then they get some kids, and you'll find that the kids also grows, and then you'll find that they also move to the different directions, right? Like now all of us, you'll find now like you'll be moving to your colleges, and then eventually you'll be going for the corporate life. So for some part, for some people, let us say for some 15 or 20 years of your life, you are there with your parents and all, but after that you will find parents are in some other place, children are in some other place. Sometimes people go to America and other outside foreign countries, and then hardly they are able to come only once or twice in a year. Many of my friends, they share that hardly they are able to come only once or twice, in India, once they go and get settled into America and Europe. So that is also basically the point is that this life is like a train journey. We will get different passengers in our life. They're all temporary relationships which we have. Yes, Divanshu, go ahead. This is the case with families also. But once a living entity is put in a particular family, he becomes attached to others as father, mother, brothers, sisters, etc. because of falsely identifying himself with the body. This attachment makes the living entity undergo the cycle of repeated birth and death. Yeah. राइट, तो यहाँ पे देखो साइकिल दिखा रखा है, राइट? सो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब क्या है? हम लोग इस वर्ल्ड में घूमते रहते हैं अलग अलग स्पीशीज में, टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट बर्थ बाय, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज when we are put into some particular family and all, then we start too much identifying with that family, and then we forget about performing our real duties of life, the real
spiritual duties of our life. So that's why that is a big failure, you know. If somebody is just focusing upon the temporary material duties without caring for the spiritual duties, our actual spiritual duties, then that's a great failure for the human form of life. So that's why one should be balanced. One should try to take care of our material duties, and also we should be very much taking care of our spiritual duties. Because if we will not do the spiritual duties, then what will happen is, you know, then we have not done the main part. Just like suppose you get admission into the IIT now. Now, if you get admission into IIT, the most important part of being into IIT is you have to study nicely, thoroughly, and you have to get good engineering education. But suppose you get into IIT and then after getting into IIT, you are too much into other things. You know, you are having your research upon how the hostels should be, how the education system should be, how the teachers should be, how the mess should be, how the library should be. Yes, you may do all those things, but then the actual purpose of getting into IIT will be not served. You know, so that is the main thing, right? That is what it says. कि क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी में आ जाते हैं तो हम उसी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के साथ हमारा पूरा लाइफ चला जाता है, यू नो. See, I think इसमें आगे आएगा, then I will give one example. Maybe आगे. Okay, so question for you, Divyanshu. Life in this material world is compared to a train journey. Why? First part, is it right or wrong? Nobody can be permanently related in this world, unlike our permanent relation with the Supreme Lord, of whom we are all part and parcels. Yes, sir. True. Second part, we are all related to each other, Yeah. become attached to each other because of identifying with our material bodies, but are separated by the time, causing us pain. Yes, sir. C part, in train journey, you stay and travel together happily. In the same way, in the material world also, we all stay with relatives and friends and live together happily. False, sir. Why? Why false? So like we stay and like in the train, it is not like we can stay and travel together permanently, Ah, that's right? the most important part, right? Only till the time our stations will come, till that time only we are together, right? As soon as our stations comes, then you know we have to go out. So the last part is in the train journey, you begin a new relation with someone and end it before getting down. Despite various transactions, no one is permanently related. Correct? Yes, sir. Yeah. So, see, this is a very important thing to learn, है ना? That how this life is like a train journey, you know. हम सब अपने अपने individual journeys में हैं, right? We are all into our individual journeys. हम सबका अपना individual journeys है. The goal of life is to, you know, revive our consciousness, Krishna consciousness, to revive our God consciousness, to revive our relationship with the Supreme Father, to have self-realization in our life. So all of us are into our different individual journeys, you know. We always have to see our life in this particular way. Many times when people don't have this understanding, and when they take this life as all in all, then what happens is, what follows is only frustration, disappointments, anxieties. Because you know, if you have only a short vision about the life, okay, life means I have to get some money, I have to get some enjoyments. So that's a very narrow vision, that's a very short vision. On the contrary, the Vedas, the Shastras tells about a broad vision of life. What is a broad vision of life? It teaches us that how this life is not all in all. We have already lived many lives, and we are this body is not all in all. The soul exists, you know, and the goal of life is something beyond just accumulation of the material objects in our life. So one should be very much aware that this is our journey. You know, we all have our individual journeys to follow, and all of us have to individually take responsibility of our journey. The goal of life is to solve the real problems of life, and that can happen by connecting with Krishna. So for that, all of us have to individually practice spiritual life. We have to individually cultivate this spiritual knowledge, and we have to individually work. You know, for example, like I cannot work for you. For example, like Divyanshu, suppose, you know, it's not that I can chant for you, or I can accumulate knowledge for you. No, you have to also do your part. And I have to do my part. That will help me to achieve the ultimate purpose of life. And same way, you also have to individually do your part. So all of us are, like, you know, Prabhupada used to say this, that we all have to learn to fly our own individual planes. जैसे नो, अगर आपने देखा होगा, like some of my friends were in Air Force, so they used to tell me कि जैसे जब पायलट की ट्रेनिंग करते हैं ना, पायलट की ट्रेनिंग, तो पहले उसको ग्राउंड पे सब सिखाते हैं, उसके साथ में लोग रहते हैं, उसके साथ में बैठा के प्लेन सिखाते हैं उसको कि कैसे चलाना चाहिए, किस किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. लेकिन जब एक बार उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है. अब उसको क्या है, फिर
एक बार उड़ने के लिए छोड़ दिया तो फिर उसको अपने आप ही अपना प्लेन चलाना है, और उसकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता है। वैसे क्या है, हम सबको भी अपना प्लेन खुद फ्लाई करना है, दैट इज द थिंग वी इम्पोर्टेंट राइट नाउ, एंड दिस लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। वी ऑल हैव टू आल्सो इंडिविजुअली understand about the value of life and understand about the value of spiritual practices, and we have to practice on our own, okay? And we have to understand that that the temporary relationships of this world are not all in all for us. We have a permanent relationship with our supreme father, okay? Okay, let us have someone else to read now further. कौन है जिसको नहीं मिला कल? शिवांश, आपसे शिवांश एंड कार्तिकेय also, right? Shivansh, you can read first, then maybe Karthikeya can read. Yes, Shivansh. The soul continued to speak, just as gold and other commodities are continually transferred from one place to another through buying and selling. So the living entity, as a result of his karma, wanders throughout the universe, being injected into various bodies in different species of life through the semen of one father after another. या जैसे कि सोना होता है, सोना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है, राइट? सोना ही ले लीजिए या फिर और भी कोई आइटम ले लीजिए, राइट? जिसके पास में भी पैसा होता है, जो भी उसको परचेज करता है, उसके पास में सोना चला जाता है। तो वैसे क्या है, हम सब भी अलग अलग बॉडीज को परचेज करते हैं एज पर अवर कर्मा। वी आल्सो गेट टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, दैट इज बीइंग स्पोकन हियर, है ना? नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट थिंग, वर्ड। The Bhagavad Gita explains that it is not by any father or mother that the living entity is given birth. The living entity's true identity is completely separate from the so called father and mother. By the laws of nature, the soul is forced to enter the semen of a father and is injected into the womb of a mother. He cannot directly control the kind of father he will get. This is automatically determined by his activities in previous lives. The law of karma forces him to go to different fathers and mothers, just like a commodity that is bought and sold. Yeah. So as per our karma, we have to get different different bodies. You know, we cannot choose our bodies. Whatever karma you have performed in the human form of life, जो भी आपने actions किए उसके हिसाब से आपको body मिलेगा. Like for example, like if you deserve a dog's body, then you will be transferred into the semen of a dog father, and from there you will be transported to the dog mother, and then you take birth in the body of a dog. So basically, as per what activities we will do, what we will deserve, we are going to get the next birth. Okay, go ahead. The living entities sometimes take shelter of an animal father and mother, and sometimes a human father and mother. Sometimes he accepts a father and mother among the birds, and sometimes he accepts a demigod father and mother in heavenly planets. As the soul transmigrates through different bodies, everyone in every form of life, be it human, animal, tree, or demigods, get a father and mother. This is not very difficult. The real difficulty is to obtain a spiritual father, a bona fide spiritual master. या तो यहाँ पे क्या बताया देखो, हमको हर एक स्पीशीज में फादर एंड मदर मिलते हैं, राइट? तो मटरल फादर एंड मदर हर एक स्पीशीज में मिलते हैं, इससे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन क्या चीज डिफिकल्ट है? टू गेट अ स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल फादर मीन्स टू गेट अ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर, अ प्रॉपर गुरु। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ओके? या गो अहेड। Therefore, the duty of a human being is to search out such a spiritual master, for under his guidance one can become free from the cycle of reincarnation, return to his original home, and attain the original Father Sri Krishna in the spiritual world. या तो इसने बता रखा है कि हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है हमारे लिए? टू सर्च फॉर अ गुरु, टू सर्च फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज व्हाट विल हैपन बाय अ स्पिरिचुअल मास्टर, he can help us in this way. So how he can help us?
First thing is he can help us to get free from this cycle of birth and death, this cycle of reincarnation, repeatedly taking birth and death in different species. And second thing is he can also help us to go back to our original place, the spiritual world. Like यहाँ पे दे रखा है ना, like here is a space and here is a spiritual world beyond that space, the Golok Vrindavan, where we belong to. So the spiritual path. So यहाँ पे example दे रखा है, like a guru, by giving the spiritual instructions, if we take instructions from a guru and follow them in our life, then what will happen? We will be able to connect ourselves with the Paramatma seated in our heart, with the Supreme Father. That is the purpose of yoga, to connect ourselves with the Supreme Father, huge. And then we can go back to the spiritual world. So that's why spiritual father is very, very important. Okay. So here is a question for you, Shivansh. You think you are raising your hand now? Maybe I will take your question. Just let us finish this exercise. What is the analogy given for the movement of soul from one place to another? तो analogy का मतलब होता है उदाहरण, है ना? तो कैसे सोल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती है, उसके लिए कौन सा एग्जांपल दिया था यहाँ पे? फर्स्ट, is this correct? First part? Yes, sir. Yes, good. Second part, the example is given of the gold. गोल्ड ले सकते हो या फिर आप बोल सकते हो जैसे आपके पास में मनी भी होती है, लेट से कॉइन हो गया, या फिर आपके पास करेंसी जो होती है, करेंसी, राइट? देखो जो करेंसी के नोट्स होते हैं वो भी अलग अलग लोगों के हाथ में जाते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस कौन डिजर्व करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, अभी वो आपके पास में, कुछ समय के बाद में वो किसी और के पास में होगा, कुछ समय के बाद वो किसी और के पास में होगा। वैसे ही क्या है, हम सब भी we are also like that currency note, we are also like the atmas is also like a currency note, so we are also transported to the different bodies based upon what activities we have done. तो उसके लिए एग्जांपल दे रखा है, you can consider as a gold or you can consider as a currency, an example. Okay, B part, is this right or wrong? Yes, sir. Right. Right? Yes. Yes, sir. And C part? That is also correct. Yes, sir. And True. last Yes. part? All are correct answers here. Yes, sir. Yes, sir. True. Actually, one of them are most correct. बाकी like that it is correct. Next is what Sir, determines the B थोड़ा wrong है ना इसमें, second part, like gold is kept safe in a velvet box. correct. As a result of karma, the jiva wanders throughout the universe, injected into a material body, like the gold is kept in a safe and beautiful box of velvet. या मतलब बहुत अप्रोप्रिएट नहीं कहेंगे, बट ये एग्जांपल बता रखा है, जैसे होता है ना गोल्ड, जैसे आपका कोई गोल्ड ज्वेलरी होता है ना, तो उसको हमेशा बहुत अच्छे सुंदर उसमें रखा जाता है, बॉक्स में रखा जाता है। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जीवा भी जो होता है, सोल आल्सो मूव्स टू द डिफरेंट बॉडीज। तो जैसे कि केसिंग जो होती है, दैट इज अ कवरिंग फॉर द यू नो ऑर्नामेंट और ज्वेलरी, वैसे हमको भी अलग अलग केसिंग मिलती है, दैट इज व्हाट मींस स्पोकन, राइट? तो रॉन्ग भी नहीं है और बहुत फिटिंग भी नहीं है। सी बेसिकली इन सब में से एक फिटिंग आंसर है, बहुत मोस्ट फिटिंग आंसर, दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न, है ना? नेक्स्ट है, व्हाट डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स फॉर अ जीवा? यस यस दिव्यांशु, क्या आएगा इसका? पेरेंट्स कैसे चूज होते हैं? फर्स्ट पार्ट इज राइट और रॉन्ग? Correct. दैट इज कॉल्ड एज, These in previous क्या lines. बोलते हैं, कर्मा, कर्मा, राइट? सेकंड, Karma सेकंड, and desires, ये भी correct. नहीं Sir, मतलब ये, like desires at the time of death, but not means after he has करेक्ट died. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थर्ड पार्ट, No, sir. गुड लक का नहीं रूल Like, रहता है उसमें, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी को भी ज्यादा गुड लक था, लाइक पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डोंट नो दिस साइंस ना, दे थिंक कि ये सब चीजें रैंडमली हो जाती है ना। अरे यार उसका गुड लक था इसलिए उसके लॉटरी लग गई, या फिर इसलिए वो टॉपर बन गया, या फिर इसलिए वो करोड़पति बन गया, या इसलिए उसने, एक्चुअली गुड लक के पीछे भी एक साइंस है, वो साइंस क्या है? दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। ओके, एंड द लास्ट पार्ट, is a type. Like ये surely नहीं कह सकते, but हाँ हो सकता है। समटाइम्स इट मे हैपन, लाइक आपको एग्जांपल याद है कोई दिव्यांशु इससे रिलेटेड एग्जांपल? कैलाश, कैलाश, राइट? Yes, sir. यू रिमेंबर Yes, कैलाश? sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. तो अभी तो उसमें कुछ बने थे ना, कुछ मैं भूल गया, बूढ़ा आदमी बने थे, बूढ़े कैलाश आप ही थे शायद, राइट? Yes, sir. है ना? स्टिक पकड़ के आप Yes, थोड़ा, sir. आई स्टिल रिमेंबर योर फेस, आप बड़े मुश्किल से चलने का ट्राई कर रहे थे, राइट? गुड। ओके, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द रियल डिफिकल्टी फॉर अ जीवा वेंडिंग इन द डिफरेंट बॉडीज लाइक ह्यूमन, एनिमल, ट्री एंड डेमिगॉड?
Most difficult thing is what? The D part, right? To get a spiritual master, a bona fide spiritual master, a proper guru, है ना? Other things are Yes, not sir. a difficulty. One can get father and mother, one can get into the womb, one can get the position of a demigod also. Okay. नेक्स्ट है हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज ओके तो अभी हम ना नेक्स्ट किसी और को नेक्स्ट किसको देने का प्लान था आपके बाद में आई थिंक कार्तिक है राइट कार्तिक है आपको आंसर करना है अभी वाला क्वेश्चन ठीक है Yes. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज अवर रियल फादर ओके टेल read out the different parts and tell whether they are right or wrong read the A part The living entity takes shelter of various temporary material bodily forms with which he has no relationship. His only relationship is uh, his with that of Supreme Lord Krishna. Yes, sir. Yes, sir. okay good B The part mother, the mother and father appear intimately related to the mother and father appear intimately related to the living entity owing to giving birth. But they only act as instruments in giving a temporary material body to jiva. Other than that, mother and father has no relation with the jiva. But Krishna's relation with jiva is eternal. True. true right good Yes, C sir. part The living entity, son of the Supreme Lord, is injected into various bodies in different species of life through the semen of one father after another. But none of these fathers have any relation with Jiva. True. hmm. Last The, part the scriptures clearly declare that Supreme Lord is supposed to be the seed-giving father of all living entities. True. yeah I can show you it's true cause right True, sir. True. Avinash is telling there is no any significance of luck in the living beings life because all happening in our life is due to our previous karma, right, sir? एक्चुअली जो प्रीवियस कर्मा होता है ना वही उसी को लक कहते हैं हम जनरली लाइक प्रीवियस कर्मा मतलब कि हमने कैसे पहले एक्टिविटीज की हैं फॉर एग्जांपल लाइक सपोज यू नो सपोज किसी ने पहले अपने पुराने जन्म में बहुत चैरिटी किया है फॉर एग्जांपल लाइक बिल गेट्स इज देयर ना नाउ ही इज गिविंग अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम फॉर चैरिटी तो अभी क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में जब बिल गेट्स को बॉडी मिलेगा ह्यूमन बॉडी मिलेगा तो उसके बाद फिर से पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत सारा पैसा चैरिटी में दिया है ना तो इसलिए क्या होगा उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी तो अभी उसी को आप बोल सकते हो कि उसका गुड लक है लेकिन वो कोई बहुत अच्छे अमीर फैमिली में पैदा हुआ है then we may say that it is a good luck but what is the science behind that good luck it is because of the previous karma which is there so that is called as the karma right so उसी को गुड लक को ही कर्मा के इफेक्ट से ही होता है जो भी गुड लक होता है ना सो कॉल्ड गुड लक बैड लक सब उस कर्मा के हिसाब से होता है ना कैसी एक्टिविटीज हमने प्रीवियसली की है उसके हिसाब से डज इट आंसर योर क्वेश्चन अविनाश Yes, sir. ऋतिक आपने भी हाथ रेज किया था ना कुछ क्वेश्चन था आपका सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट आपका कोई क्वेश्चन था ऋतिक यू कैन आस्क नाउ अगर आपका था तो Yes, sir. हाँ ऋतिक प्लीज Sir, in one of the slides, it हाँ was shown that our soul transfer from demigods and हाँ animals and plants and करेक्ट humans. करेक्ट So, करेक्ट uh, animals, plants, and humans are all they die, so that करेक्ट we can focus on our main purpose, that is chanting holy names and serving the Lord purpose. हम्म But demigods also die, sir. हाँ करेक्ट डेमिगॉड्स आल्सो डाई Demigods die. या मैं इस पे आता हूँ लास्ट में आता हूँ ठीक है इसको हम फिनिश करते हैं जस्ट 5 मिनट और लगेगा फिनिश करने में आई विल शो यू श्लोका फ्रॉम गीता वेयर इट इज बीइंग टोल्ड दैट हाउ डेमिगॉड्स आल्सो डाई ओके ठीक है लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस वन है ना Okay, sir. यस कार्तिकेय व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट पार्ट रीड आउट To serve his parents as an ideal son, since they have given him material body. ट्रू और फॉल्स हाँ It is false. The real फॉल्स duty is to serve Lord. The real duty is to serve Lord and yeah that is there of course and this is also correct only in one sense that one can serve his parents there's no it's not that spirituality means you have to just serve Krishna and don't forget about the whole world or forget about your material duties not like that है ना but that is not the main duty बता रखा है ठीक है go ahead next part to understand that his actual relation is with Supreme Lord and serve him. True. yes good third part To know that the real difficulty is to know that the real difficulty is to get ideal parents and therefore serve them gratefully. False. correct last part To not
to not identify with the supreme temporary material world received from parent, but utilize it to serve the supreme Lord, who is the original father of all living entities. Cool. Yeah, correct, right? Main duty is for a human being is basically one has to understand about one's relationship with the Supreme Father, you know. Okay. Yes, Karthikeya, you can only read this. तो यहाँ पे Living देखोगे आप, beings. यहाँ पे वीडियो Okay. आपकी स्क्रीन में है, वीडियो है, यहाँ पे Yes, थोड़ा sir. सा एनिमेशन दिखा है कैसे यू नो अ पर्सन इज जस्ट डाइंग और कैसे उसे सोल निकल के आ रही है, यू नो, जस्ट एक थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का है, एक्चुअल में नहीं है, बिकॉज सोल कैन नॉट बी सीन विद द यू नो कैमरा एंड ऑल, बिकॉज सोल इज नॉट मटेरियल, बट एक छोटा सा एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को इसमें मूव करते हुए, Yes, sir. बॉडी से सोल Yes, निकल sir. रही है, नो. ओके, या रीड इट. The living beings is eternal, the pure soul continuum, and has no relation with so-called fathers and mothers. He falsely accepts himself as their son and acts affectionately. After he dies, however, the relationship is finished. Under these circumstances, one should not be falsely involved with jubilation and limitation. या that's why one should not become too much worried about the material relationships. That is what is being spoken here. Okay, go ahead. The living entity is eternal and imperishable. He has no beginning and no end, nor does he take birth or die. The living being is equal in quality to the Supreme Lord. Both are spiritual personalities. But because the living entity is so small, he is prone to be illusioned by the material energy, and thus he creates bodies for himself according to his different desires and activities. Yeah, so I will take a shloka test for all of you. Okay, यहाँ पे बता रखा है शुरू में about soul का nature बता रखा है ना, that soul is eternal, imperishable, no beginning, no end. Okay, which shloka of Bhagavad Gita this is? Please raise your hand. किसको आता है देखते हैं. व्यांशु ने raise किया है. Okay, और which shloka of Bhagavad Gita this is? और कोई? No, huh? Oh, this is very important shloka. Yes, Divyanshu, you know that shloka fully? Sir, I don't remember the shloka number, but I हाँ remember the हाँ shloka. हाँ हाँ. Tell the shloka. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Wonderful, very nice. What is the meaning? Approximate meaning? Like na jayate mriyate vakadachin means the soul never dies nor it takes birth, and na jayate mriyate vakadachin nor it comes into being means ना वो था पहले कभी, ना उसने कभी पहले बर्थ लिया था, ना वो लेगा, और ना वो अभी बर्थ लेता है, ऐसा कुछ था. एंड Hmm. अजो नित्य शाश्वत means it is eternal. अजो means एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं है, बट वो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स थी: इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, हाँ, एंड वन मोर मीनिंग आई yeah. डोंट नो. चलो good ना to. हन्यते हन्यमाने शरीरे. हाँ, what is the meaning of this? न हन्यते हन्यमाने लाइक शरीर मतलब जब शरीर का नाश हो जाता है तो उसका हानि नहीं होता है. हन्यते मतलब हानि होना, राइट? न हन्यते हन्यमाने शरीर. जब शरीर की हानि हो जाती है तो सोल की हानि नहीं होती है. Okay, good. Very happy to see. आपको learn shloka remembered है. Good. Others also can try to learn है ना, very nicely. चलो, go ahead. Who can read next now? और कोई जिसने कल और आज नहीं पढ़ पाया है, he can read first. I want to give him the opportunity. Any of you who has not read yesterday, today? You can read those. जिसने भी नहीं पढ़ा है कल और आज में. Yes, Nitesh, you can read. Just last two slides are remaining. The Vedas tell us that the soul is responsible for his lives in the material world, where he is trapped in the cycle of reincarnation, getting one material body after another. If he likes, he can remain suffering in the prison house of material existence, or he can return to his original home in the spiritual world. Although God arranges through the material energy to give the living beings the bodies they desire,
The Lord's true desire is that the conditioned souls get off the miserable Ferris wheel of material life and return home back to Godhead. What it says, Nitish, can you explain? So like we're all trapped in the cycle of this birth and death, and like we get reincarnated like after we get reincarnated. So Hmm. like we desire like so you told us like three conditions, right? Three Correct. conditions to get the next body. So according to our desires and karmas and all, we get the new body. And Correct. like Krishna, God gives also the body which we desire mostly, but He wants us to come go back to Him. Hmm. Yeah. Krishna does not want us to suffer in this world, you know. So like that's what is yeah. Correct. Mm. ये आप People समझते हो can like continue suffering. हाँ यार you know what is the meaning of Ferris wheel पता है आपको Ferris wheel क्या होता है Yes, Ferris sir. wheel आप मेले मेले में गए होंगे तो मेले में आपने देखा ना बड़ा सा सर्कल जो होता है जिसमें लोग बैठते हैं और यू नो ऊपर नीचे जाता है वो देखा है आप लोगों ने उसमें बैठने का बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस रहता है यू नो Yes, sir. जब नीचे आता है तो बड़ा डर लगता है ऊपर आता है तो बड़ा Yes, sir. करेक्ट उसको बोलते हैं फेरिस व्हील तो वैसे क्या है हम सब भी ना अलग अलग स्पीशीज में जाते रहते हैं कभी हमको देवता का बॉडी मिलता है कभी हमको ह्यूमन का बॉडी मिलता है कभी हम लोअर स्पीशीज में जाते हैं वैसे ही जो सोल है वो अलग अलग बॉडीज में जाता रहता है इसलिए उसको बोला गया फेरिस व्हील यू नो ओके ओके लास्ट थिंग नितेश हिट दिस इज लास्ट आई थिंक या लास्ट Body of the child, and the body fell lifeless to the floor. Chitraketu and the other relatives. So did you go ahead? no no Chitraketu and the other relatives were astonished. They cut the shackles of their false attachment and gave up their lamentation. Then they performed the funeral ceremony, cremating the body. Because King Chitraketu and his queen had fully cognizant of spiritual knowledge, including the science of reincarnation, they easily gave up the material attachment that leads to pain, fear, grief, and illusion. yeah. So when the child, when he spoke all this wonderful philosophy, the real philosophy of life, then what happens is, then the king and the queen, both of their illusion was over, and then they were able to become relieved. Okay. So see, because of this illusion of considering that we are the bodies and this life is all in all, and our family relationship they are all in all. Because of this, what happens is we all have to suffer with the pain, fear, grief, illusion. If we understand that how we are not simply these bodies, we are the atmas and we are in our journeys, then we will be not affected by all these changes which are anyways going to happen, you know. Like we will find that a day will come when our relatives, friends, parents, they will leave us and same way we will also have to leave this world, you know. So if we are living our life on the foundation of spiritual truths, then what will happen is we will not become too much disturbed by all these temporary changes in the life, you know. On the contrary, if we are too much identifying with this material world and material life, then it will be very difficult for us to accept these, you know, realities of life. So that is what is being spoken here. You know, like in the initial part, we find Chitraketu and the wife, because they were ignorant, they were not having the spiritual knowledge, they were too much disturbed because of this change, you know, because of the change, the death of the son. But later on, because of now having proper knowledge, they became freed from that pain, illusion, grief. Okay. So I have one small question for you. Uh, can you tell about some another personality from our shastras who also was having a lot of tension and anxiety and you know fear है ना but when he heard the spiritual message then he also became relieved from this you know this kind of anxieties you can just raise your hands huh? I want to see just like चित्रकेतु महाराज जिस सिचुएशन में थे वैसे और भी कोई पर्सनैलिटी था जिसको बहुत एंजाइटी था और फिर बाद में उसका रिलीव हो गया कार्तिक आयुष ने रेज किया हैंड ओके ओके थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो इंडियड आप देखोगे कि एक जो मेन वन ऑफ द मेन बुक्स जिसको हम स्टडी करते हैं स्पेशल बुक्स में उसका उसका आने का जो रीजन है वो भी वही है आई हैव गिवन यू हिंट आल्सो नाउ लेट अस सी कितने लोग आया हाउ मेनी ऑफ यू गुड कॉट ये चलो देन आई थिंक चलो सो कार्तिकेय कैन यू एक्सप्लेन हु इज दैट पर्सनालिटी एंड व्हाई अर्जुन हाँ कार्तिकेय अर्जुन के उसने कृष्ण ने उनको बताया था कि डेथ है सब वो जो अपने आगे अपने सब भीष्म पितामह को जब उन सबको नहीं मारना चाह रहे थे तो उनको बताया हाँ वन हरि बोल फॉर कार्तिकेय हरि बोल यस अर्जुना अर्जुन भी जो था वो भी बिकॉज ही वाज आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी तो वो भी इसलिए बट
इसलिए वो भी बहुत अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा था. वो भी सोच रहा था कि अरे मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ, अपने टीचर्स को कैसे मार सकता हूँ, right? But then Krishna spoke Bhagavad Gita for him, and you know the first basic thing which Krishna taught to him was what? That we are not these temporary material bodies, but we are the Atmas. That's why we find in Bhagavad Gita there's a whole section about knowledge of the Atma, you know. And when the Arjuna heard that knowledge, then he was able to again, you know, come back to his duty. So that's why. So that was another thing. Okay. So this is the end of this section. Just एक दो questions इसमें दे रखे हैं. Yeah, can you read this quickly? Just two questions are there, then we'll end. This you can only read. If someone loses mother, father, or grandmother, then one cries out loudly during their death due to the fear of being separated from them. What should be our understanding? Anyways, Khair, I think this need not to be discussed. We already discussed it. We understand that how it's not that we will not feel pain. Just like Arjuna was also feeling pain because, anyways, because that's a loss, right? Because it's very natural that people with whom we stay, we will develop some affection for them, right? But we have to remain fixed up in our duties. That is what, and we have to do something good for the soul of the person. You know, in this world, so many people are there to help the person, the body of the people or person. You know, giving the emotional support or the bodily support, but the most important support is the support for the soul, you know, like uh, like you know, when some devotee also leaves the body, so what we do is we also chant for him, we also pray for him, we pray that he be able to have a good destination in his life. That we all do actually. That is a perfect help one we can have. Okay. Okay, so I think this is also we have discussed, so we are done with this topic. Okay, so just to summarize, what are the main thing we wanted to learn from this particular, what is the main thing which we are learning from this particular pastime is that how in this world we all are into our individual journeys. This life is a temporary life, and the relatives, the friends, etc., which we have in our world, they're all temporarily available to us, but our actual connection is with our Supreme Father Krishna. So while we are living in this world, surely we have to take care of our duties towards parents, friends, society, nation, but we don't have to forget our actual duty towards the Supreme Father, because that is something which is meant, which the human life is meant for actually. So this is the main thing which we wanted to learn from this right now. And like all of you, what is the way we can show our love to our Father, Supreme Father? By following His instructions. So Krishna says in the Gita that how our human life should be spent. The human life should be spent for understanding our relationship with our Supreme Father, and in trying to cultivate our relationship with that Father. You know, and what is the way to cultivate that relationships? See, किसी के साथ भी अगर आपको relationship strike करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? Can any of you say? मान लो suppose आयुष के साथ, आयुष is a good boy. I like to I was very happy to meet him in Allahabad. So suppose if I have to develop some good relationship with Ayush, what I have to do? How can I develop more relationship with Ayush? Any of you can say? Conversation. Sorry? Conversation. By talk. Yes, sir. Okay. Divyanshu? Spending time with him. Spending time with him, having some conversation, or kuch? So to love and care him. To love him, to care for him, good. Or so all these things, correct? Now I have to first of all I have to know more about Ayush. You know, for example, like I have to know about him. I have to know more about him. You know what are his likings, what are his dislikes, and I don't know. I have asked him when he came to Allahabad, right? आपको क्या favorite लगता है खाने में पीने में? मैंने पूछा था, मैं भूल गया हूँ लेकिन okay. But I remember that he liked that bread tukda, that shai tukda the most, right, Ayush? Yes, sir. Yeah. So see, I have to know about what is his liking, what is his disliking, or I have to know more about the person, right? Now, what are his qualities, and what are his features? Then I will be able to strike a relationship with that person, right? Same way, if we also have to strike a relationship with our Supreme Father, we already have a relationship, but when we came in this world, we have somehow forgotten that relationship right now. But if we want to again reinstate our relationship, then we have to also know more and more about our Father, and that is what we do. That's why that is the purpose that Krishna has made this Bhagavad Gita and the Vedas and all, so that they are love letters of Krishna, by which we can know more and more about Krishna, and we have to spend time with Father, like we have to spend time. So when we are chanting Hare Krishna, we are spending with our time with Father, Supreme Father, it's a personal appointment time with our Supreme Father. That's why when we are chanting, we should really try to put our full energy into hearing the mantra and praying to Krishna. Because see, if you are sincere in calling Krishna, then Krishna immediately comes, like we know now that when Draupadi called Krishna,
So same way in our life also, when we are chanting Hare Krishna, we are actually calling Krishna that Krishna, please come and help me in my life. And more we will come to know about Krishna. That Krishna means we have to know about Krishna, how is he dealing with the devotees, what are his qualities, and also we have to know about this world, which is a creation of Krishna. So more we will have a relationship with. In that way, we'll be able to strike more relationship with our Supreme Father. And that way we will be able to perfect our lives. So thank you so much for your patient hearing. And just before I end, I can just show you one shloka from Gita where Krishna is very clearly telling that yes, I am that Supreme Father. I am the original father of all the species. Okay, so this is the shloka. क्योंकि मैंने अभी आयुष का थोड़ा बढ़ाई कर दिया है, आयुष आप ही पढ़ो श्लोका को, चलो मेरे पीछे. Krishna is telling सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महदयोनिर् तासां ब्रह्मयोनिः अहं बीजप्रदापिता. अहं बीजप्रदापिता. See what Krishna is telling that सर्व योनिषु कौन्तेय, जो सारी योनियां हैं, सुनो ना 84 लाख योनियां. So Krishna is telling कि जो सारी योनियां हैं, सारी स्पीशीज हैं, उन सबको सीड देने वाला कौन हूँ? अहम बीज प्रदापिता, that I am the seed giving father. मैं ही हूँ जिसने वो सारी स्पीशीज क्रिएट की हैं. मैं ही हूँ जो कि ओरिजिनल जो हर एक सोल जो एंटर करती है अलग अलग स्पीशीज में, उस सोल को कौन प्रोवाइड करता है? कृष्णा ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल. सी दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग. रीड आयुष. I don't know where close to it. So see, Krishna is saying that it should be understood that all the species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material world, and I am the seed-giving father. So Krishna is the one who has claimed that I am the father of every species. See, none of the scientists can create any species. That's why we find ना कभी कुछ species जैसे कई सारी species अभी extinct हो जा रही है, तो अभी वो lost हो गई. Like हमारे पास बहुत सारी varieties of cows हुआ करती थी, अभी बहुत सारी varieties नहीं रह गई हैं. अब वापस scientists उसको वापस create भी नहीं कर सकते हैं, because क्या जो original seed देते हैं हर एक species के लिए वो कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं. That is how it works. That's why Krishna is saying that I am the seed giving father. That's why our most important duty is our duty towards the Supreme Father. That should be continued very nicely. And that's it, है ना? Next week we will try to discuss another good topic. I'm thinking that we'll keep a debate next week, so that we'll try to discuss. Okay. Thank you so much from my side, and do chant your rounds nicely. To participate in all your competitions. There are very wonderful opportunities for you to learn these wonderful spiritual books and to strike your relationship more and more with the Supreme Father. So do it very nicely. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. I'm now available for next 10 minutes. If you have some questions, and those of you who feel to continue, you can please continue. Okay. So if I'm not wrong, I think ऋतिक ने क्वेश्चन पहले पूछा था. एक बार ऋतिक का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर दिनांशु आपके पास आते हैं. ऋतिक ने पूछा था कि जो देवता होते हैं क्या उन लोगों का भी लाइफ टेम्पररी होता है, या जो देवता होते हैं उनका भी लाइफ टेम्पररी होता है? I can show you one shloka. See, Krishna says in the Gita that comes, I think that is 8.16. Yeah, the shloka is 8.16, 8th chapter, 16th shloka. Hrithik, Krishna is telling, Abram bhuvana loka punaravartino arjuna mamupetya tu kaunteya punarjanmana vidyate. See, Krishna is telling, Abram bhuvana loka punaravartino arjuna. See what Krishna is telling. Hrithik, can you read this? Aham Brahma. This one. Translation. Read. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are the places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. या सो कृष्णा क्या बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट प्लैनेट्स है, हाईएस्ट प्लैनेट्स में क्या आते हैं? स्वर्गलोक आता है, ब्रह्मलोक आता है. ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट है ना इस वर्ल्ड में, आप अगर पढ़ोगे पूरा उसका कॉस्मोलॉजी में दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है पूरे यूनिवर्स का कि स्वर्गलोक कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे अर्थ से, वो भी दे रखा है. स्वर्गलोक है, महलोक है, तपोलोक है, जनलोक है, और उसके ऊपर में ब्रह्मलोक है. जो इस यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? दैट इज ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं. तो ब्रह्मा जी के प्लैनेट से लेके नीचे सारे पाताल लोक, कहीं पे भी आप जाएंगे इस पूरे यूनिवर्स में, आपको वहां पे हमेशा बर्थ एंड डेथ को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा. यहाँ पे ये दे रखा है ना, राइट?
From the highest planet to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death takes place. You see, अब्रम भुगनालु का पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, वापस आना जाना पड़ता रहता है, वहां पे आना आवागमन होता रहता है. तो बेसिकली पॉइंट ये कि इवन जो देवताज होते हैं ना, वो लोग को भी टेम्पररी समय के लिए ही वो लोग जाते हैं. देवता कौन बनते हैं? अगर आप हमारे वेदास में दे रखा है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर यज्ञ करेंगे, अगर कुछ आपके पास पुण्य कर्म आप अगर अगर ले लेंगे तो आपको देवता बनने का मौका मिलेगा. तो इससे देवता भी परमानेंट नहीं रहते हैं. इसलिए आपने देखा होगा ना कि देवता लोग अमृत के लिए तड़पते रहते हैं. अमृत बेसिकली उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेता है. देवताओं की भी डेथ होती है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, जो स्वर्गलोक है वो कैसा है? जैसे मान लो एक 5 स्टार होटल है. अभी 5 स्टार होटल में आप जाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 5 स्टार होटल में अगर आप रहना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, राइट? मनी. हाँ, अगर आपके पास पैसा होगा तब आप वहां पे स्टे कर सकते हो, राइट? और आप कब तक स्टे कर सकते हो 5 स्टार होटल में? जब तक कि आपके पास मनी है. जैसे मनी आपका एग्जॉस्ट हो वैसे ही टाटा बाय बाय, राइट? वैसे ही जो स्वर्ग लोग है वो सब भी क्या है, दे आर आल्सो लाइक 5 स्टार. वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बहुत अच्छे गार्डन्स हैं, सोमरस है, उर्वशी भी है, वो सब भी है, अप्सरास भी है. बट आप वहाँ पे हमेशा एंजॉय नहीं कर सकते हो. जब तक कि आपके पास पुण्य कर्म है तब तक आप एंजॉय करते हो, और फिर वापस आपको नीचे आना पड़ता है. अनदर वन मोर श्लोक आई कैन शो यू, वेयर कृष्णा सेज दैट हाउ जो देवता होते हैं वहाँ पे एंजॉय करने के बाद वापस उनको वापस ह्यूमन बॉडी में आना पड़ता है. दैट इज क्षीणे पुण्य. कृष्णा सेज this comes in the 9th chapter of Bhagavad Gita 21. See what it says. Maybe आप इसका डायरेक्टली वो पढ़ सकते हो, ट्रांसलेशन है. पढ़ो ऋतिक, ये बता रखा है देवतास के बारे में. See? When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Okay, sorry, sir. ये वाला when they have this enjoyed. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये देवतास के लिए बता रहे हैं कि जो लोग स्वर्गलोक में जाते हैं उनके साथ में क्या होता है, वहां पे उनको बहुत वास्ट एंजॉयमेंट मिलता है. दे हैव लॉट ऑफ सेंस प्लेजर्स देयर. लेकिन जैसे उनकी पायस एक्टिविटीज, जैसे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, अगेन उसको इस मटल वर्ल्ड में आना पड़ता है. किसी मटल वर्ल्ड में उनको अगेन वापस इस अर्थ प्लेनेट पे आना पड़ता है, मॉर्टल वर्ल्ड पे. और यहाँ पे क्या है, रिपीटेडली बर्थ एंड डेथ उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. ओके, तो सी जो देवी देवता है ना, वो भी एक पोस्ट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरेक्टर है ना आपका कॉलेज में, डायरेक्टर है, एचओडीज है, ये सब पोस्ट है. वैसे ही ना जो वायु देवता है, चंद्र देवता है, ये सब फिक्स्ड नहीं है. ये सब पोस्ट है, और अलग अलग लोगों को मौका मिलता है उन पोस्ट को ऑक्यूपाई करने का, राइट? लाइक हो सकता है कि हम में से भी कई लोग पहले वायु देवता रहे हो सकता है हम में से भी कई लोग इंद्रदेव भी रहे हो, बिकॉज वो सब क्या पोस्ट है. तो जो भी व्यक्ति पुण्य करता है उसके हिसाब से उसको पोस्ट मिलती है. और जब तक पुण्य रहता है उसके लिए तब तक मिलती है. इससे आपने देखा होगा, जैसे आपने सुना होगा, इंद्र जो है ना, जब भी कोई वो तपस्या वपस्या करता है तो इंद्र थोड़े घबरा जाता है कि मेरा पोस्ट चला जाएगा, राइट? आपने कई स्टोरी सुनी होगी कि कैसे वो तपस्या भंग करते हैं. विश्वामित्र मुनि का तपस्या भंग किया था. क्यों? Yes. क्योंकि क्या है, उनका पोस्ट पे खतरा जाता है ना, इसलिए वो डर जाता है. सो लाइक दैट. ओके, तो मेन पॉइंट क्या है कि इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स में ना आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ का सफर करना ही पड़ेगा. ऑफ कोर्स हेवन प्लेनेट में क्या होता है ना कि आप वहाँ पे जस्ट आप प्रोड्यूस होते हो, वहाँ पे आपको डिजीजेस नहीं होती है, ओल्ड एज नहीं होती है. आप वहाँ पे जाते हो, एंजॉय करते हो, और फिर बॉडी लीव कर देते हो जैसे आप खत्म होते हो. वहाँ पे लाइक वो ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. पूरा डिटेल्ड है, 5th कैंटो में अगर पढ़ेंगे भागवतम में दिखाया दे रखा है उसके बारे में, ठीक है? बट एसेंस वाली बात है कि वहां पर भी आपको बर्थ, ओल्ड एज ये सब सफर करना पड़ेगा. इसलिए इंटेलिजेंस क्या है? टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? And to go back to the spiritual world where you don't have to suffer with this, old age, birth, disease, and death. Okay? Is it okay, Ritik? Yes, I had that doubt for many years. Yeah, it's a very common doubt. It's a very common doubt. Okay. Thank you for asking this question. Yes, Divyanshu, you can now you ask your question. कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए लाइक जो लोग डेफ या फिर जो लोग बोल नहीं पाते तो उनके लिए बेस्ट मेथड क्या है? ओके, तो अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो उसके लिए क्या तरीका है ना? मतलब आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसा पूछने का रीजन मतलब वो चैंट नहीं कर पाएगा, राइट? देखो, देयर इज अ सेइंग, यस सर, कृष्णा इज चैंटिंग भाव. में दो ही चीजें हैं मेनली, लाइक
Correct. So surely chanting is the most important activity. But suppose if somebody अगर कोई बोल नहीं पाता है ना, see देखो Krishna sees our intentions of our hearts. Krishna is there's a saying called भावग्राही जनार्दना. भगवान हमारे भाव को ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं. ओके, तो आप देखोगे कि कृष्णा लॉर्ड राम ना, जो जटायु था, जटायु को चैंटिंग नहीं कर पाता था, बट बिकॉज वो डिजायर करता था भगवान को सब करने के लिए, इसलिए कृष्ण ने, इसलिए लॉर्ड राम ने उसको अपना मर्सी दिया. तो सपोज किसी को अगर वैसा डिसेबिलिटी मिला है बिकॉज ऑफ इस प्रीवियस कर्मा कि वो बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर इस लाइफ में वो अगर सीरियस बनता है अपने लाइफ के बारे में, तो नो प्रॉब्लम. अगर वो चैंट नहीं भी कर पा रहा है, बोल के नहीं कर पा रहा है, अपने मन में वो कर सकता है, और एटलीस्ट वो सुन सकता है भगवान के बारे में, और कीर्तन सुन सकता है भगवान के बारे में और सुन सकता है. सो कृष्णा विल गिव हिम द सेम बेनिफिट विच ही विल गिव टू एनीवन एल्स हु विल चैंट हरे कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा सीज द क्वालिटी ऑफ अवर हार्ट, यू नो. इट्स नॉट दैट कृष्णा ने डिफाइन कर रखा है कि ठीक है जिसने इतने नंबर ऑफ टाइम्स हरे कृष्णा बोल दिया उसका मैं बेड़ा पार कर दूंगा, ऐसा नहीं है, यू नो. मेन पार्ट है कि कौन कितने, यू नो, जैसे द्रौपदी ने पूरा 16 राउंड्स हरे कृष्णा मंत्रा 108 टाइम्स हमेशा नहीं किया ना, बट मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि विद व्हाट फीलिंग, विद व्हाट इंटेंसिटी वी आर कॉलिंग कृष्णास नेम, यू नो. तो समबडी इज बीइंग बॉर्न डेफ, वो भी अगर अगर वो सिंसियर डिजायर रखता है अपने हार्ट में कृष्णा को सर्व करने के लिए, और वो भगवान के बारे में और सुनता है, और जो भी उसको मौका मिलता है सेवा करने का, he may not be able to speak. See, chanting is also one of the services to Krishna. You know, we have to engage all our senses in the service of Krishna. So chanting is the way by which engage our tongue in the service of Krishna. Same way we have other senses, na? We have our hands, we have our eyes, we have our ears. So if somebody is not able to engage his tongue in service of Krishna, he can use other senses for serving Krishna, and in that way he will get equal benefit as somebody else will get by chanting. So he can, he can try to do some service to Krishna. You know, he can clean the temple of the Lord, or he can make some garland of the Lord with his hands, or he can, hear more about Krishna. He can hear kirtans. In that way also he will get the same result. Is that okay, Divanshu? Yes, sir. Thanks. Okay, good question. Yes, Utkarsh, what's your question? Yes, Utkarsh, you can ask. हेलो, आई एम ऑडिबल सर? हाँ, you're audible now. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेजर हम लोगों का जो लिविंग एंटिटीज एंड लॉन, सबका जो मेजर पर्पस है कि गॉड को सर्व करना, सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना. हम Correct. लोग मरते हैं, फिर मरने के बाद जन्म होता है, फिर उसके बाद भी हमें गॉड को सर्व करना होता है, गॉड को, सुप्रीम लॉर्ड को. लेकिन सर जब हमारा जब मेजर पर्पस ही सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना है, जब हम एक बार मर जाते हैं तो उसके बाद हमें वहीं रखा जा सकता है सर्व करने के लिए, तो फिर वापस में क्यों जन्म मिलता है? ये क्वेश्चन है. ओके 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 फाइन. आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि हमारा पर्पस है टू सर्व कृष्णा, तो हम या अगर हम जैसे सपोज अभी आप सर्व करना स्टार्ट कर रहे हो कृष्णा को, तो ऐसा क्यों नहीं कि आपको ऐसे ही हाँ, हमेशा सर्व करने के लिए रख दिया जाए, राइट? क्यों ना आपको, है ना, वापस आपको डेथ क्यों लेना पड़ता है? आप ये पूछना चाहते हो? नहीं सर, जैसे कि हम इस लाइफ में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हाँ फिर जब डेथ होगी, हाँ डेथ के बाद फिर लाइफ मिलेगी, ठीक है. जब हाँ मेजर पर्पस कृष्णा को सर्व करना ही है, तो फिर हमें नेक्स्ट लाइफ में किसी भी जीव जंतु का या किसी भी बॉडी में क्यों ट्रांसफर किया जाता है? हमें वहीं रखा जा सकता है अगर हमें सर्व ही करना है लॉर्ड को, तो क्यों हमें नीचे भेजा गया है? ओके फाइन. तो अच्छा ठीक है. तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि हम लोग मतलब इसी लाइफ में क्यों नहीं रहते, हमारा डेथ क्यों होता है, ये बोलना चाहते हैं आप? हमको लाइक अगर सर्व ही करना है अभी नहीं जैसे. सर, जैसे कि हाँ, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डेथ हो जाए अच्छी बात है, मरना भी. हाँ, थोड़ा क्वेश्चन आपका क्लैरिटी से जैसे समझना कि चाहता हूँ मैं, फिर से बताओ. हाँ सर, मैं वही समझाना चाह रहा कि किसी की लेट से डेथ हो गई, ठीक है, वो उसके बाद हाँ मरा, हाँ बैकुंठ धाम पहुंच गया, ठीक है, हाँ. उसने इस लाइफ में कृष्णा को सर्व किया. अब नेक्स्ट लाइफ में मैं कहना चाह रहा था कि उसका जो जीवन है उसे नया जीवन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेजर पर्पस हमारा कृष्णा को सर्व करना है, हाँ तो हमें वहीं रखा जाए कि कृष्णा को हम सर्व कर सकें, जैसे कि जब मेजर या पर्पस ही या तो एक्चुअली एक बार जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं तो वापस नहीं आना पड़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड में. हमको बैकग्राउंड जाने के बाद वापस यहाँ पे नहीं आना पड़ता है. यहाँ पे हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग अलग से एंजॉय करना चाहते हैं, तब हमको यहाँ पे थोड़ा भगवान भेजते हैं. बट एक बार अगर हम लोग सी सी इसलिए इस वर्ल्ड में आप देखेंगे कि सब कोई अपने एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहा है.
क्योंकि भगवान को सर्व करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, राइट? डू यू एग्री? Yes, sir. या तो एक्चुअली क्या अभी हम डिजीज कंडीशन में, इस वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो हम डिजीज कंडीशन में, डिजीज कंडीशन हमारी डिजीज क्या है? दैट वी ट्राई टू बी एंजॉयर्स, दैट इज अवर डिजीज कंडीशन, ओके? लेकिन जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट लेते हैं, by taking shelter of Krishna's holy name and by understanding the message of Gita, we will be freed from this disease of trying to be enjoyers, trying to be the controllers, okay? तो जब हम इस डिजीज से फ्री हो जाएंगे, एंजॉयर बनने की, कंट्रोलर बनने की डिजीज से, और जब हम भगवान के लिए जो नेचुरल हमारा लव है उसको अवेकन करेंगे, तो फिर हमको वापस इस मेटल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ेगा, फिर हम लोग वहीं पे रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही, आप एटर्नली सर्व कर सकते हो, वापस आपको बर्थ वर्थ के झंझट में नहीं फंसना पड़ता है। समझ में आया आपको पॉइंट? Yes, sir. हम इस मेटल वर्ल्ड में क्यों आए? क्योंकि हम अलग से एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जब तक हम रहेंगे तब इसलिए हमको सफर करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने डिजायर्स को वापस प्योरीफाई कर दे, वापस अपने एक्चुअल पोजीशन को समझ जाए, तो हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाएंगे तो वापस हमको नहीं आना पड़ेगा। Indeed, Krishna wants that we remain there only happily. It is our desire that sometimes we are very adamant that we only want to come and want to take an experience to enjoy independently. तो भगवान ने हमको फैसिलिटीज दिया कि ठीक है चलो आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है करो, ट्राई करो, अपने हिसाब से ट्राई कर लो। और इससे भगवान हमको सब भुला भी देते हैं इस वर्ल्ड में। क्यों भुला देते हैं? कि चलो ठीक है, इसलिए आप देखोगे पूरा वर्ल्ड बना भी इस तरीके से कि हमको सब कुछ भुलाने के लिए बना है वर्ल्ड, हमको ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बना है कि हम एंजॉयर बन सकते हैं, हम कंट्रोलर बन सकते हैं। इससे इस वर्ल्ड में सारे जो डिस्ट्रैक्शन है वो सब इल्यूजन्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमारा इच्छा है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने बस एक अरेंजमेंट किया है हमारे लिए, ठीक है चलो आप ट्राई करके देखो। लेकिन भगवान का वो इच्छा नहीं है, गेटिंग है? जैसे जेल होता है, गवर्नमेंट का इच्छा नहीं होता है कि जेल रहे और लोग उसमें आके सफर करें और थोड़ा पनिशमेंट मिले, बट क्या है, इट्स अ नेसेसिटी, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ओके? डज इट आंसर योर क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. तो इस वर्ल्ड में Yes, sir. हम Thank you, sir. ओके ओके फाइन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, थैंक यू, हैप्पी टू सी योर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। द वेरी फैक्ट कि आप लास्ट तक रुके हो, दिव्यांशु, कार्तिकेय, उत्कर्ष, नितेश, ऋतिक, आयुष, शिवांश, अच्छा है। आई फील वेरी मच एनकरेज टू सी दैट यू हैव गुड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, सो गुड, कीप इट अप, है ना? थैंक यू। कल से आप लोग का शायद वो वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रहा है ना, एकेडमिक ट्रेनिंग वाला। ऑल द बेस्ट, टेक नाइस एडवांटेज ऑफ दैट वर्कशॉप, ओके? वी विल मीट नेक्स्ट वीक, है ना? थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। एंड मे बी आपको मैं वो कीर्तन जरा, आई विल जस्ट पुट दैट कीर्तन फॉर 5 minutes in case if you want to relish that kirtan, है ना? You can feel liberty to move, है ना? It's a nice kirtan, I was seeing it on internet. Okay. आप ऐसे कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, otherwise you can continue. It's a beautiful kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, a little louder, everybody. A little louder, I can't hear you. One more time, a little louder, everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, 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 everybody chant and dance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,